city of Bengaluru, the IT city, the BT city, the technological capital of India, and now slowly transforming itself into the sporting capital of India. We are all set to start the 10-day extravaganza of sports. Khelo India University Games opening ceremony. Ladies and gentlemen, boys and girls, tamagellarigu aadarada hೃತ್ಪೂರ್ವಕ swagata suswagata. Namaskara. From the Kanteerava Stadium in Bengaluru, Karnataka, नमस्कार, मैं गीतिका गंजूधर। मंच पे विराजमान सभी महानुभावों का, इस स्टेडियम में उपस्थित सभी श्रोतागण का, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों का और दूरदर्शन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस भव्य उद्घाटन समारोह में The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has rightly said that the image of a nation is not just about its military strength or its economic power. The soft face of a nation also makes a huge impact, a huge difference. Sports, he says, is one such soft power that can renegotiate and re-navigate the attention of the world onto India. Khelo India is one such initiative in that very direction. We all know that Khelo India is an initiative that is a brainchild of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and it was brought about to strengthen at grassroots level the development of the sports ecosystem in our country and to motivate and inspire sportsmen and women all across the length and breadth of our great nation. Absolutely right. And importantly, when we come to this edition of the Khelo India University Games, ladies and gentlemen, boys and girls, close to 4,000, that is 3,800 plus athletes from 180 plus universities, and still you don't want to clap. Spread across 6 venues in Bengaluru are all here to participate in the event and showcase their talents. They are here to vie for the top honors in 20 disciplines hosted by the Government of Karnataka and the Jain University in Bengaluru, and of course ably supported by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. We are all here for the opening ceremony of the first ever mass participation national level sporting event being held in the post-pandemic, the biggest university games of Namma Bharata, Namma India. Ladies and gentlemen, boys and girls, we are all here for that. एक बार फिर से अब खेलेगा इंडिया. Ladies and gentlemen, there are several other firsts attached to these games. This is the first Khelo India Green Game. These games have been mounted with the help of recyclable materials, and this zone that you all entered is a no-waste zone. धरती माँ के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए एक बार फिर से हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं. Absolutely, Hasiru Krida Kuta, and it's indeed a matter of great pride, privilege and pleasure that we have with us Shri M. Venkaiah Naidu, Honorable Vice President of India, Shri Thawar Chand Gehlot, Honorable Governor of Karnataka, Shri Baswaraj S. Bommai, the Honorable Chief Minister of Karnataka. We are honored to have with us the gracious presence of Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports and Information and Broadcasting, Government of India, Shri Nishit Pramanik, Minister of State for Youth Affairs and Sports and Minister of State for Home, Government of India, Dr. K.C. Narayana Gowda, Honorable Minister for Youth Empowerment and Sports and Sericulture, Government of Karnataka. We'd also like to welcome all the dignitaries from the Ministry of Youth Affairs and Sports, the Sports Authority of India, and of course the Government of Karnataka. And ladies and gentlemen, a resounding welcome to all the athletes present here in this stadium, your coaches, your support staff, and all the volunteers. Swagatam, Ati Swagatam, Shubha Swagatam, Ati Swagatam. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕರುನಾಡಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. So with that backdrop, I would request all of you to kindly rise for the national anthem. ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. I would request all of you ದಯಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
police band ge ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, Nadagite is the state anthem of Karnataka, written by Rashtrakavi Kuvempu and music composed by Dr. C. Ashwath. This envisages a Karnataka that recognizes its position in the Committee of Indian States, believes in peaceful coexistence with the sister states. Karnataka Rajyada Nadagiteya Prasuti Irate. I would like to once again request all of you to be standing, and I would request Jaya Bharata Jananiya Tanujate Jaya He Karnataka Mate, noted award-winning singer Dr. K.K. Krishnamurthy and team will present Nadagite. ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದ್ರದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನ ಅವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮನಿರನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಶಂಕರರ ಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ನನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪನ್ನ ಕಂಪಲ ತುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳ ಧಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ ನಾರಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಕೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಡಿದ ನಾಡೆ ರಂಗಣ ಜಗಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ ಕಾವೇರಿಯ ಬಲರಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಧ್ಯಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಗಾಯಕ ವೈದಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Thank you very much, Dr. K.K. Krishnamurthy and team for the soulful rendition of Nadagite. Dayavitu ella kulthukolla. I request all of you to be seated, please. And now we'll have the felicitation for the dignitaries. At the outset, I would request the Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports, Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur, to kindly honor Shri M. Venkaiah Naidu, the Honorable Vice President of India. Well, ladies and gentlemen, there is also a very, very special significance. Please glue your eyes onto the stage. The felicitation would consist of a shawl, a cardamom har, Mysore peta, and the memento. The memento will be a very, very special memento, and I'm going to tell you about that in just a bit. The traditional Mysore peta, Mokshagundam Vishveshwaraya, one of the illustrious son of India, known for that, and now the shawl is being presented by the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Baswaraj Bommai, and the cardamom hara also being presented by the Honorable Minister. And this memento, made by the famous Channapatana toys artisans, has a direct connection to our logo Veera, which represents the mighty
and playful youth. Ladies and gentlemen, Karnataka proud to have the large number of elephants, and the world famous Mysore Dasara, the elephant carries the Ambari. And now I'd like to request Dr. Ashwath Narayan CN, Honorable Minister of Higher Education, IT and BT, Science and Technology and Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood, to please felicitate Shri Thawar Chand Gehlot. Shri K.C. Narayan Gowda, Dr. K.C. Narayan Gowda will honor the Honorable Governor, Shri Thawar Chand Gehlot. Shri Thawar Chand Gehlot, now being welcomed in our midst. बहुत स्वागत Shri Thawar Chand Gehlot ji. And now I would request once again the Honorable Minister of Sericulture, Youth Empowerment and Sports, Government of Karnataka, Dr. K.C. Narayan Gowda, to honor the Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai. Ladies and gentlemen, your sound of the clapping is missing. Karnataka is the host state. Karnataka is indeed proud. And the Honorable Chief Minister has taken all steps that it is going to be a Green Games, Hasiru Krida Kutake Sanmanya Mukhyamantri Netritva. And now I'd like to request Dr. K.C. Narayana Gowda to please felicitate Shri Anurag Singh Thakurji, Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports, Information and Broadcasting, Government of India. It's a matter of great pride that Shri Anurag Singh Thakurji is here and, of course, taking sports to a new level under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. I'd like to request Dr. K.C. Narayana Gowda ji to kindly felicitate Shri Nishit Pramanik ji, Honorable Union Minister of State for Home Affairs, Youth Affairs and Sports, Government of India. Dr. K. Govindaraj also is participating in this felicitation along with Shri K.C. Narayan Gowda. Hearty welcome to Shri Nishit Pramanik. And now I would request the Commissioner, Department of Youth Empowerment and Sports, Dr. H.N. Gopalakrishna, to kindly felicitate Shri P.C. Mohan, Honorable Member of Parliament, Bengaluru Central. And also to Dr. K. Govindaraj, Honorable Deputy Leader of the Opposition Legislative Council and President of the Karnataka Olympic Association, Govindaraj avarige swagata. Srimati Sujata Chaturvedi, Secretary, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. And also Colonel Dr. G. Tiruvasagam, Honorable President, Association of Indian Universities, Commissioner will give him, felicitate him. I'd now like to request Ms. Anju Bobby George, Padma Shri, Khel Ratna and Arjuna Audi, to please felicitate Shri Basavaraj Horati, Honorable Chairperson, Karnataka Legislative Council. Ms. Anju Bobby George, we all know, was the first Indian athlete to win a medal in the World Championship. She is kindly felicitating Shri Basavaraj Horati. Honorable Chairperson, Karnataka Legislative Council. Also Shri K.C. Narayan Gowda, and also to Dr. Chandraj Roychand, the Chancellor of Jain deemed to be University. Requesting Anju Bobby George to kindly felicitate Shri K.C. Narayana Gowda, Honorable Minister of Sericulture, Youth Empowerment and Sports, Government of Karnataka, and Dr. Chandraj Roychand, Chancellor, Jain deemed to be University. Thank you all. Ladies and gentlemen, I'd now like to request the Honorable Minister for Youth Empowerment and Sports and Sericulture, Government of Karnataka, Dr. K.C. Narayana Gowda, to kindly open this opening ceremony with the welcome address. Swagata Bhashana, Dr. K.C. Narayan Gowda. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೇಮ್ ಅನ್ನ ಆಗಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಂ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆ, ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ, ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಈ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೇಮಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. हमारा भारत के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी इस खेलो इंडिया गेम के लिए हम सबको हर चीज में हर वक्त हमको साथ दिया है. सर, आप सबको हम अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಕ್ಸಿತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ, ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ವರ್ಡಿಜಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದಂಥ PC ಮೋಹನ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ರಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಸುಜಾತಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ತೀರ್ವ ಸರಂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಮ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿದಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂಥ ಪೂಜ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿದವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ अभिनंदनेಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. हमारा देश की प्रधानमंत्री जी हम इस खेलो इंडिया गेम के लिए सभी को उन्होंने आशीर्वाद दिया है. उनको मैं कर्नाटका गवर्नमेंट हमारा मुख्यमंत्री का तरफ से और हमारा खेलो इंडिया का तरफ से मैं अभिनंदन धन्यवाद करना चाह रहा हूं. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಲಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಗೇಮು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗೆಲಾಗಲಿ ಸೋಲಾಗಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೊಡಸ್ಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನ ತರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. और अब मैं मंच पे विराजमान माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से निवेदन करूंगी कि वे इस सभा को संबोधित करें. सर, आपके नेतृत्व में विश्व के कोने कोने में भारतीय खिलाड़ी अपना लोहा मनवा रहे हैं. सर, आज इस अवसर पर आप हम सबको संबोधित करें. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome the Honorable Union Minister for Youth Affairs and Sports, Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur ji. भारत के माननीय उपराष्ट्रपति परम आदरणीय वेंकैया नायडू जी, कर्नाटक के माननीय राज्यपाल आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बसवराज बोम्मई जी, केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम, खेल राज्य मंत्री भाई निशित प्रमाणिक जी, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री अश्वथ नारायण जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष आदरणीय बसवराज जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले हमारे कर्नाटक सरकार के जुझारू खेल मंत्री भाई नारायण गौड़ा जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई पी.सी. मोहन जी, कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और एमएलसी श्री गोविंदराज जी, मुख्य सचिव श्री रवि कुमार जी, भारत सरकार की
माननीय सचिव खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग श्रीमती सुजाता जी, वाइस चेयरमैन स्पोर्ट्स अथॉरिटी कर्नाटक के पुरुषोत्तम जी और हमारी जैन यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर चंद्रराज रॉयचंद जी, सम्मानित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण, सभी ओलंपियंस, पैरालंपियंस, देश के कोने कोने से आए हुए खिलाड़ी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो बेंगलुरु की तरफ से, खेल प्रेमियों की तरफ से, भारत सरकार के खेल मंत्रालय की तरफ से देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन आप सबकी ओर से करना चाहता हूं। मित्रों, इससे पिछला यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई वो उड़ीसा में हुई थी और उड़ीसा में पहले एडिशन में अगर आप उस हॉल को देखते, उस सभा को देखते, तो वहां के लोगों में बहुत जोश था कि हमारे यहां पर पहली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रही हैं। और पोस्ट पैंडेमिक वी हैव सीन द लास्ट 2 years as the years of pandemic. Our lives, our lifestyles have been disrupted. There was no such big event which could be organized at the national level or at the regional level. So I could say after 2 years, this is the first opportunity for us to hold such a prestigious and big event. And we have the Honorable Vice President of India and the Governor of Karnataka and the Chief Minister of Karnataka among us. How's the Josh? बेंगलुरु वालों का जोश जरा पता चलना चाहिए। मैंने कहा था उड़ीसा में बड़ा जोश था, आज कर्नाटका का जोश जरा पता चले, खेलें यहां पर होने जा रही हैं। हाउ द जोश? आर यू रेडी फॉर द यूनिवर्सिटी गेम्स? Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had the vision of this Khelo India scheme, the Khelo India University Games and the Khelo India Youth Games. He wanted to give a platform to the upcoming players to showcase their talent, to showcase what they can do in the field of sports. And I've seen as far as the Khelo India Youth Games and the Khelo India University Games, in their first and second edition of the Youth Games and the first edition of University Games, there was an electrifying atmosphere. Today, early morning when I reached Bengaluru, I straight away went to the Jain University. I met more than 500 players. Honorable Vice President Sir, from 208 universities across the country, we have 3,900 players participating in this event. This is one of the largest multidiscipline sports event in the country, and Karnataka is hosting it, and I can say it, the kind of facilities which has been provided here is of world class, one of the best facilities we have so far. तो मैं कर्नाटक की सरकार को भी और जैन यूनिवर्सिटी को भी इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अच्छी बात यह है कि राज्य की सरकार ने और जैन यूनिवर्सिटी ने इसको ग्रीन गेम्स करने का निर्णय लिया है और पर्यावरण को लेकर प्रधानमंत्री जी की पहल बहुत बड़ी है और आज की युवा पीढ़ी अगर ये कर रही है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बात और मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जो भारतीय खेलें हैं, योगासना हो, मलखंभ हो, उसको भी इसमें स्थान दिया गया है। और आज जब हम इवेंट देखने गए तो सबसे ज्यादा लोग मलखंभ को देखने के लिए वहां पर आए थे। और आज मैं यहां पर कहना चाहता हूं, भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में
देश के खेलों को, जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स हैं, उनको हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि देश और दुनिया भर में उन खेलों को और बड़ा स्थान मिल सके। यही नहीं, आज यहां पर जैसे मैंने कहा कि देश भर के खिलाड़ी आए हैं, इन सब खिलाड़ियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हार जीत खेल का हिस्सा है। मैं तो ये कहूंगा कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलिए और आगे बढ़िए। हमने देखा पिछली बार जो इन खेलों में खेले थे, उनमें से बहुत सारे खिलाड़ी जिनको देश के लिए खेलने का अवसर मिला है, इस बार के भी यूनिवर्सिटी गेम्स में जो बेंगलुरु में खेलने आए हैं, आने वाली जो भविष्य की एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम्स होंगी, उनमें इनमें से बहुत सारे खिलाड़ियों को आप भारत के लिए खेलता हुआ देखोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मित्रों, हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े ओलंपियंस भी, पैरालंपियंस भी आज मंच और सभा में बैठे हैं। जैन यूनिवर्सिटी में भी मैंने देखा बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी आए हैं, जो उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए आइडियल भी हैं, आइकॉन भी हैं। उनको उनसे मिलने का अवसर मिलता है। मैं जब स्वयं क्रिकेट खेलता था, और मुझे आज तक याद है कि 1992 में जब इंडिया अंडर 19 का कैंप लगाने बैंगलोर में 1 महीना रुका, तो उस समय हमारे अंडर 19 के कैंप में उस समय अनिल कुंबले खेल गए थे इंडिया के लिए शायद। तो वो वहां पर आकर बॉलिंग कर रहे, तो हमारे लिए वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन थे। जवागल श्रीनाथ, राहुल द्रविड़, ये सब उस समय भारत के लिए खेल रहे थे। इनका ड्रेसिंग रूम में आना ही हमारे लिए बड़ी बात थी, बातचीत करना। इसी तरह से दिल्ली में कभी खेलते थे, कभी कपिल देव आए, कभी कोई और आए, तो उभरते हुए खिलाड़ी को उनसे बात करना, सीखना एक बहुत बड़ा अवसर होता है। मेरा निवेदन रहेगा, कर्नाटक में जितने ओलंपियंस हैं और जो टॉप एथलीट्स हैं, वो कृपया करके इन वेन्यूज पर जाएं। केवल अपनी खेल वालों तक नहीं, बाकी खेल वालों से भी मिलें, अपना अनुभव शेयर करें और उनको भविष्य के लिए मेंटर करें, प्रेरित करें, इंस्पायर करें, ताकि वो देश के खेलने के लिए तैयार हो सकें। दूसरा बात मैं आपसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की करना चाहता हूं, नेशनल इंटीग्रेशन की। प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। चाहे 90 का दशक हो, तब भी देश भर के राज्यों से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्नाटक में आते थे। लेकिन इतना बड़ा खेलों का आयोजन, मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्टिंग इवेंट, आज से पहले शायद नहीं हुआ होगा। ये अवसर मिला है। जैन यूनिवर्सिटी के जितने विद्यार्थी यहां पर उपस्थित हैं और जितने आए नहीं हैं लेकिन टीवी पर सुन रहे हैं, या बाकी कॉलेजेस के भी हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि आप जाकर चैंपियनशिप को देखिए, मैचेस को देखिए, अलग अलग राज्य से आए हुए खिलाड़ियों के साथ मिलिए, उनके राज्य की संस्कृति को, उनके विचार को समझने का प्रयास कीजिए और उनका अपने शहर में स्वागत भी कीजिए, ताकि देश को जोड़ने का काम जो हम यहां पर कर सकते हैं। आप आईटी हब के लिए जाने जाते हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी जाने जाएंगे, और अपने इस होस्टिंग कल्चर के लिए एक वार्म होस्ट के नाते भी जाना जाए, ताकि जो भी खिलाड़ी यहां से वापस जाएं, वो याद रखें कि मुझे बेंगलुरु के ये और ये लोग मिले थे, और जीवन भर के लिए आपका उनसे नाता हो सके। आज भी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में, क्विज में बहुत सारी बातें कही कि आपने ये स्थान देखा है, ये म्यूजियम देखा है, दूसरा म्यूजियम देखा है। वो एक ही तरफ से प्रेरणा दे रहे हैं, देश में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी, आपको देश दिखाने के लिए भी और देश को जानने के लिए भी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये खेलों का प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत बड़ा है। हम भव्य आयोजन यहां पर करें, केवल सुविधाओं से भव्य नहीं होता है। आपको दिल से सभी खिलाड़ियों का स्वागत भी करना होगा। राज्य की सरकार की ओर से और जैन यूनिवर्सिटी की ओर से कोई कमी नहीं है, लेकिन जन भागीदारी होगी तो ये ऐतिहासिक आयोजन होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है बेंगलुरु के लोग इसमें पूरी तरह से भाग लेंगे। चुने हुए प्रतिनिधि भी, विधायक भी, एमएलसी भी, एमपी भी और आम नागरिक भी भाग लेगा, ताकि लोग यहां से वापस जाएं तो दिल में एक याद लेकर जाएं
कि यूनिवर्सिटी गेम्स पर कहीं भाग लिया था तो बेंगलुरु की गेम्स हमें सदा याद आती रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप ये करेंगे। और मित्रों, जो दो अतिथि आज प्रमुख तौर से हम सबके बीच में हैं, आदरणीय वेंकैया नायडू जी, जिनका मैंने शुरू में उल्लेख किया। माननीय उपराष्ट्रपति जी के दिन की शुरुआत ही बैडमिंटन के कोर्ट पर होती है। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब से वो सांसद थे या उपराष्ट्रपति भी बने, वो फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और बैडमिंटन और बाकी स्पोर्ट्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। फिट इंडिया और खेलो इंडिया के प्रधानमंत्री जी के अभियान को और बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया है। दूसरी ओर गवर्नर साहब हमारे बीच में हैं, जो अपने समय में बहुत सारी खेलों में भाग लेते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक बार स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने गए, केंद्रीय मंत्री थे, तो स्विमिंग पूल का उद्घाटन फीता काट कर नहीं किया, रिबन काट कर नहीं किया। स्विमिंग पूल पर कम से कम 25 फीट ऊपर से छलांग लगाने का काम हमारे गवर्नर साहब ने उस समय मंत्री रहते हुए उसका उद्घाटन करने का काम किया था। तो सबकी खेलों की बैकग्राउंड से भारत को फिट रखने के लिए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का और गवर्नर साहब का बहुत बहुत स्वागत करें। काइंडली पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and also to welcome the players, athletes, coaches and the support staff in Bengaluru for the Khelo India University Games. Let me once again thank the Karnataka government, especially the sports department and the education department, for helping us to host these games, and I'm wishing you all a very good luck and all the best for the Khelo India University Games. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद, धन्यवाद सर। जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा, Bengaluru has always had the iconic status of being called the IT capital of India. And now, after producing one sports legend after the other, it has also gained fame as the sports nucleus of India. Absolutely. In addition to this, we have a rich cultural heritage of Karnataka, which showcases to the entire world. Now, coming to the sports arena, ladies and gentlemen, under the able leadership of the Honorable Chief Minister, Shri Basavaraj Bommai, at the backdrop of Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 sports ratnas have been going to be identified under the Krida Dattu Yojana, the sportsperson's adoption scheme, and they will be trained so that these sports ratnas will become Khel Ratnas and thereafter represent India in the Olympics and of course Asian Games and Commonwealth Games. So ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai, for his speech. Karnataka Rajyada Sanmanya Mukhyamantриಗಳಾದ Shri Basavaraj Bommai. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೇಮ್ ಈ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. Sir, it is a pleasure and privilege to host Khelo India in Bengaluru, and it is adding to the pleasure that our very own Honorable Vice President Adarniya M. Venkaiah Naidu ji is inaugurating such a important and a big event in Bengaluru. In the presence of Tawarsand Gehlot ji, Honorable Governor of Karnataka, and our very young, dynamic Sports, Information, Broadcasting, Youth Affairs Minister, Sri Anurag Singh Thakur ji, then Sri Nitish Pramanik ji, Honorable Minister for State for Home, Youth Affairs and Sports,
Honorable Chairman Karnataka Legislative Council, Sri Basuraj Horati ji, Nama Youth Empowerment, Sericulture Mantrigalu, Sports Mantrigaladanta, Atmiyaradanಥ Sri K.C. Narayanagowdre, Higher Education Mantrigalu, ITBT Mantrigalu, ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಿ ಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಸಕರು ಆದಂಥ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರೇ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಹರ್ಷದ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖೇಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಕೋಚಸ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿ, ITBT ಎಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 3800 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ 20 ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂಥ ಒಂದು ಆಯೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಇಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮೀಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಚಂಗರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಒಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ to prove our hospitality, our love and affection to the sports, and our dedication to the entire nation for the integrity of the nation, unity of the nation, as well as the culture which these sportsmen bring along with them from different parts of the country. It's the integration of not only sports, it's the integration of culture too. Sports has been an ancient habit of a mankind. By nature, human beings are very sportive. By nature, human beings are adventurous. Therefore, sports is a very natural activity for all of us. Sports bring in lot of determination. Sports bring in lot of discipline, and therefore, sports bring in lot of character too. It's a character building exercise where hard work, dedication, determination is part of it. For a man to be successful, for a woman to be successful, these characters are very important. Therefore, any sportsman or woman are basically a very good human beings, and they are the achievers. Achievement is something more than the success, and that kind of achievement will be seen in every sportsman.
our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji, has given a new dimension and a new impetus to our sporting world. He has changed the entire mindset of a sportsman of India. Hitherto it was said and seen that हम ओलंपिक में कुछ नहीं कर सकते, उधर तक पहुंच सकते हैं, मेडल जीत नहीं सकते. But our Prime Minister, as a determined character he is, he set a goal before Tokyo Olympics. He just gave a simple slogan, Khelo India. Khelo India. आप भारत के नौजवान खेलते रहो. Then immediately he gave another slogan, Fit India. You have to be healthy, therefore you have to be fit. Fitness and the attitude to win is good enough. Therefore he gave a slogan just before the Olympics, Jeeto India. And the result is the highest number of medals in any Olympics till date we have won in Tokyo, and that is the inspiring spirit and the support of our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. The saga should continue. The effort should continue. The achievement should continue. Hence, the university games are the important integrated part of building Khelo India. University is a place where it gives you opportunity to get best out of you in all the fields. In your academics, in your sports, in your personality. And this is a time, my dear young friends, that you have to venture out. Not only venture out, you have to adventure out. You open your wings, fly high, make an effort. What seems to be impossible will look like it is very easily achievable. Therefore, my dear friends, I invite you to the world of sports in Bangalore. And the best of Bangalore climate is here. The best of places we have got in Bangalore. The best of culture we have in Bangalore. And Aruna Thakurji, I assure you, it is not only the just arrangements. We will give the best of hospitality, warm friendship, and all kind of help and guidance to all the athletes who have come outside Karnataka. They have to remember for the long time to come in their life. And that has been our nature. That has been our culture. Therefore, I thank Government of India and the Sports Affairs Ministry, Anurag Thakurji, that you have given us opportunity to host this Khelo India. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಗೇಮನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಆದ ಮೇಲೆ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ಜಿ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್, please make assessment, and next time all India level any game is there, the first preference should be given to Bangalore and Bangalore alone. We will be always ready and cooperate. ಇವತ್ತು ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡುಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗಾಗಲೇ, ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ಜಿ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಂತ. He is a best sportsman not only in the games, he is a best sportsman in politics too. He is most sportive person, and he is such an inspiring leader. He has been inspiring me right from my college days. Through his works, through his words, and through his achievements.
And a person with that kind of integrity is inaugurating the game. What it means? Play honestly, play with integrity. That gives you a character. And winning and losing is part of life. We win today to lose tomorrow. We lose tomorrow to win today. That's how it is. ಆದ್ರಿಂದ ಸೋಲು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡಾ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನೌ. And 10 days will be a festival of sports, culture, and ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭಕಾಮನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗೆಲ್ಲೋರ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಯಾರು ಸೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವಿನ್. And one last word I want to give you is play to win, play not to lose. Play to win, play not to lose. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. अगर आप हारने से नहीं डरोगे तो जीत हासिल करोगे. ಸೋಲಿನ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ದಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿ, ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿ, ಖುಷಿಲಿ ಆಟ ಆಡಿ. ಪ್ಲೇ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್. ಧನ್ಯವಾದ. Well, ladies and gentlemen, ಬಂಧುಗಳೇ, the Honorable Chief Minister started his speech with Kannadada Namaskara. What it signifies is that Kannadigas are known for Hrudaya Vaishalyate, and more importantly, belief in one of the important aspects of Sanatana Dharma, Athithi Devo Bhava. So for the next 10 days, you will enjoy Bengaluru and Karnataka and take back memories of your lifetime. Let's all give a round of applause to the Honorable Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraja Bommai, for his dynamic leadership. Dhanyavadagalu, sir. Thank you, sir, for your address. And now, ladies and gentlemen, it's an honor to request the Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawarchand Gehlot ji, to please address the opening ceremony of the Khelo India University Games 2021. Please, sir. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के इस शुभारंभ अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय बसवराज बोम्मई जी, भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री आदरणीय नीतीश जी, कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष आदरणीय बसवराज एस होराती जी, कर्नाटक सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्री आदरणीय नारायण गौड़ा जी, विश्वविद्यालय से संबंधित उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय अश्वत्थ नारायण जी, सांसद आदरणीय पीसी मोहन जी, एमएलसी आदरणीय गोविंदराज जी, कर्नाटक सरकार के समस्त अधिकारीगण, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजनकर्ता, जैन विश्वविद्यालय के चांसलर महोदय, खेल जगत से जुड़े हुए सभी खिलाड़ी और खेल प्रेमी महानुभावों, सम्माननीय अतिथिगण एवं देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए खिलाड़ीगण, देवी और सज्जनों, मैं आप सबको सादर नमस्कार करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने का
अवसर कर्नाटक राज्य को दिया है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए और बेंगलोर के लिए विशेष हर्ष का विषय है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण, कर्नाटक सरकार, जैन यूनिवर्सिटी और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के द्वारा इन खेलों का आयोजन जैन यूनिवर्सिटी कैंपस, श्री कंटीरवा स्टेडियम, फील्ड मार्शल करियप्पा हॉकी स्टेडियम और साई शूटिंग रेंज सहित कई अत्याधुनिक खेल सुविधा युक्त स्थानों पर किया जा रहा है। मेरा मानना है कि लोगों को बेहतर और स्वस्थ जीवन के लिए खेल और फिटनेस से जुड़ी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अनेकों अवसरों पर लोगों से अपने रोजमर्रा के जीवन में खेल और खेलों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हम डीडी न्यूज़ पर यहीं पर रोक रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को सीधे देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल डीडी इंडिया पर। उस चैनल में इस कार्यक्रम का इन 7-8 वर्षों में देश भर में खेल कूद गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना करके बजट में प्रावधान करके देश के खिलाड़ियों को खेल कूद गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोग्राम खेलो इंडिया का हिस्सा है और उन्होंने जो सपना संजोया है उसको साकार करना हमारा अपना कर्तव्य है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि देश में खेल कूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और विश्व स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो भारत का, इस दृष्टिकोण से हमको प्रयास करने की आवश्यकता है, सहयोग देने की आवश्यकता है। खेलो इंडिया का उद्देश्य वार्षिक खेल और प्रतियोगिताओं में युवाओं की सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ स्पोर्ट फॉर ऑल और स्पोर्ट फॉर एक्सीलेंस को भी बढ़ावा देना है। फिट इंडिया मूवमेंट भी एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। भारत उच्च शिक्षा अनुदान आयोग ने यूजीसी ने भी देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को खेल गतिविधियां आयोजित करने के लिए निर्देशित किया है और निर्णय भी लिया है। मैं मानता हूं कि उनके इस निर्णय से यूनिवर्सिटी परिसर में खेल कूद गतिविधियां बढ़ेगी और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। देश के कोने कोने से खेल प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए अगस्त 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति जो आज के मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल का लॉन्च किया था और इस खेल प्रतिभा खोज पोर्टल के माध्यम से खिलाड़ियों से जानकारी मंगाते हैं और जो श्रेष्ठ खिलाड़ी हो सकते हैं उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाती है। इस पोर्टल पर युवा खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों को अपलोड करते हैं, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले आवेदकों को ट्रायल के लिए बुलाया जाता है और योग्य उम्मीदवारों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है और फिर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों को भारत सरकार के खेल मंत्रालय की ओर से भी सुविधाएं दी जाती है, परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास जब ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय था और दिव्यांग जन सशक्तिकरण उसका हिस्सा है, मेरे विभाग की ओर से भी हमने खेल गतिविधियों में उनको प्रोत्साहित देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे।
आपने और हमने देखा ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में सामान्य खिलाड़ियों ने अभी तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन करके 7 मेडल जीते थे। वहीं उसी स्थान पर टोक्यो में पैरालंपिक्स गेम हुए, अभी तक के श्रेष्ठ प्रदर्शन को और ठीक करते हुए पैरालंपिक गेम में भारत के खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीते हैं और भारत सरकार ने और कर्नाटक की सरकार ने उन सब खिलाड़ियों का यहाँ भी स्वागत किया था और भारत सरकार की ओर से दिल्ली में भी स्वागत किया गया था। निश्चित रूप से खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये खेलो इंडिया अभियान जो चलाया जा रहा है निश्चित रूप से सुखद होगा। आप और हम सब भारत के खिलाड़ियों का विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट खेल देख पाएंगे। आज के इस अवसर पर जो अनुराग ठाकुर जी ने आग्रह किया कि जो पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले खेल गतिविधियों में योगदान दिया है वो भी और उनके साथ परिवारजन भी, समाजजन भी खेल कूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। निश्चित रूप से कल आने वाला भारत के खिलाड़ियों का होगा। खेल की दृष्टि से भारत का नाम गौरवान्वित करने में भारत के खिलाड़ी सफल होंगे। मैं बेंगलोर में जो आयोजन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है और मुख्यमंत्री जी ने कर्नाटक सरकार के माध्यम से भी खेल कूद गतिविधियों को बढ़ाने का काम किया है। मैं सरकार की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये प्रतियोगिताएं भी संपन्न कराने में सरकार पूरा सहयोग देगी और आगे भी खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाकर उस पर अमल करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। Well, ladies and gentlemen, the Honorable Governor has called upon the entire sporting fraternity to utilize the platform of Khelo India University Games, represent India and thereby bring laurels to the country. Let's all give a round of applause. Jorada Kartadanadondige, let's all thank the Honorable Governor for his inspiring address. Dhanyawad, sir. देवियों और सज्जनों, आज भारत में खेलों के प्रति जो जोश, जज्बा और जुनून देखा जाता है वो कुछ अलग सा है, नया सा है, डिफरेंट है। ये जोश, ये जुनून और ये जज्बा, ये लहर शायद उस नारे का नतीजा है जो हमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया is an initiative that is the brainchild of Shri Narendra Modi ji, and it was created to create a nurturing environment for all sportsmen and women across the length and breadth of our great nation. विश्व के किसी भी कोने में जब भारतीय खिलाड़ी सफलता का परचम लहराता है तो सबसे ज़्यादा खुशी शायद हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को ही होती है। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते वे थकते नहीं हैं। He was very much a part of the initial edition of Khelo India University Games, and this event today would be incomplete without a message from him. Ladies and gentlemen, देवियों और सज्जनों, एक खास संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का सभी खिलाड़ियों के लिए और हम सभी भारतवासियों के लिए। Let's give a round of applause and let the clapping reach Delhi and wherever the Honorable Prime Minister is. Avara and the Bhashanavanna Idiga Kirana. Let's have the video, please. नमस्कार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बेंगलुरु शहर अपने आप में देश के युवा जोश की पहचान है। बेंगलुरु प्रोफेशनल्स की आन बान और शान है। डिजिटल इंडिया वाले बेंगलुरु में खेलो इंडिया का आह्वान
अपने आप में अहम है। स्टार्टअप्स की दुनिया में स्पोर्ट्स का ये संगम अद्भुत है। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का होना इस खूबसूरत शहर की एनर्जी को और बढ़ाएगा और देश के नौजवान भी यहां से एक नई ऊर्जा लेकर के लौटेंगे। मैं कर्नाटका सरकार को इन खेलों के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। ग्लोबल पैंडेमिक की तमाम चुनौतियों के बीच ये खेल भारत के युवाओं के दृढ़ संकल्प और जज्बे का उदाहरण है। मैं आपके इन प्रयासों को, इस हौसले को सैल्यूट करता हूं। ये युवा हौसला आज देश को हर क्षेत्र में नई गति से आगे ले जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, सफल होने का पहला मंत्र होता है टीम स्पिरिट। स्पोर्ट्स से हमें यही टीम स्पिरिट सीखने को मिलती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी आप इसे साक्षात अनुभव करेंगे। यही टीम स्पिरिट आपको जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी देती है। खेल में जीत का मतलब होता है होलिस्टिक अप्रोच, 100% डेडिकेशन, हर दिशा में प्रयास और 100% प्रयास। आप में से ही कई खिलाड़ी निकलेंगे जो आगे राज्य स्तर पर खेलेंगे। आप में से कई युवा आगे इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करेंगे। स्पोर्ट्स फील्ड का आपका यह अनुभव आपको लाइफ की हर फील्ड में हेल्प करेगा। स्पोर्ट्स सच्चे अर्थ में जीवन का सच्चा सपोर्ट सिस्टम है। जो शक्ति, जो सीख आपको स्पोर्ट्स में आगे ले जाती है, वही आपको जीवन में भी आगे ले जाती है। स्पोर्ट्स और लाइफ दोनों में जज्बे का, जोश का, पैशन का बहुत महत्व होता है। स्पोर्ट्स और लाइफ दोनों में जो चुनौतियों को गले लगाता है, वही तो विजेता होता है। स्पोर्ट्स और लाइफ दोनों में हार भी जीत होती है, हार भी सीख होती है। स्पोर्ट्स और लाइफ दोनों में ईमानदारी आपको सबसे आगे तक लेकर जाती है। स्पोर्ट्स और लाइफ दोनों में पल पल का महत्व है, वर्तमान पल का अधिक महत्व है। इस पल में जीने, इस पल में कुछ कर गुजर जाने का महत्व है। जीत को पचाने का हुनर और हार से सीखने की कला जीवन की प्रगति के सबसे मूल्यवान अंग होते हैं। और ये हम मैदान में, खेल खेल में ही सीख लेते हैं। खेल में जब एक और शरीर ऊर्जा से भरा होता है, खिलाड़ी के एक्शन में तीव्रता हावी हो जाती है, उस समय अच्छे खिलाड़ी का मस्तिष्क शांत होता है,
धैर्य से भरा होता है। ये जीवन जीने की बहुत बड़ी कला होती है। साथियों, आप नए भारत के युवा हैं। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के ध्वजवाहक भी हैं। आपकी युवा सोच, आपका युवा अप्रोच आज देश की नीतियों को तय कर रही है। आज युवाओं ने फिटनेस को देश के विकास का मंत्र बना दिया है। आज युवाओं ने स्पोर्ट्स को पुरानी सोच के बंधनों से आजाद कर दिया है। नई एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स पर बल है या फिर आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, प्लेयर्स के सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी या फिर स्पोर्ट्स में आधुनिक टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल, यही है नए भारत की पहचान। भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, उनकी आशाएं नए भारत के निर्णयों का आधार बन रही है। अब देश में नए स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित हो रहे हैं। अब देश में डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज बन रही है। ये आपकी सहूलियत के लिए है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए है। साथियों, स्पोर्ट्स की पावर देश की पावर बढ़ाती है। स्पोर्ट्स में पहचान देश की पहचान बढ़ाती है। मुझे आज भी याद है जब मैं टोक्यो ओलंपिक से लौटकर आए खिलाड़ियों से मिला था, उनके चेहरे पर अपनी जीत से ज्यादा देश के लिए जीतने का गर्व था। देश की जीत से मिलने वाली खुशी का कोई मुकाबला नहीं है। आप भी आज सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं खेल रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी गेम्स भले हो, लेकिन ये मानकर खेलिए कि आप देश के लिए खेल रहे हैं। देश के लिए आपके भीतर एक उत्तम खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। यही जज्बा आपको आगे लेकर जाएगा। यही भावना आपको मैदान पर जिताएगी और मेडल भी दिलाएगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी युवा साथी खूब खेलेंगे, खूब खेलेंगे। इसी विश्वास के साथ देश भर से आप सभी युवा साथियों को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हार भी जीत होती है, हार में भी सीख होती है। देखिए कितनी सरलता से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों को और असल जिंदगी को जोड़ा। लेसन्स दैट वी लर्न इन स्पोर्ट्स can be applied to our lives too. Yes, indeed, ladies and gentlemen, in today's event, we are now moving on to the most important moment, to listen to the words of wisdom from the Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu, and thereafter declaring the game. So please put your hands together. Hagu swagatisi, Bharata Deshada Ganatavetta Uparashtrapatigalaada, Shri M. Venkaiah Naidu avaranna. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ತವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರೇ, ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದ मुख्यमंत्री के साथ जो कार्यक्रम में भाग ले रहे यहाँ का क्रीड़ा मंत्री डॉक्टर के.सी. नारायण गौडरे, संसद सदस्य श्री पी.सी. मोहन अवरू, MLC श्री गोविंदराज अवरू, all the other officers and the sports persons
from various universities who have come across the country to this prestigious event here in this beautiful city of Bengaluru. I am very happy to be amidst you today to take part in this prestigious, important occasion of this sports meet today. Khelo India University Games 2021. It gives me really great pleasure. Just now we have heard from the Prime Minister the importance of sports, and also the Central Minister and the Chief Minister and all. I only appeal to all the youngsters across the country, college, university students, to make sports as part of their life so that you can lead a meaningful life. Doing some exercise, playing some game of your choice will make you physically fit and mentally alert, and you can really take the country forward by joining the sport activity. I don't want to give a long speech, but I feel that the new education policy, which is giving so much stress on sports being an activity, should be followed in letter and spirit by all the state governments. And I personally feel that the states and the center must also award and reward certain amount of marks to the sports persons in the admissions, in the promotions, and in various departments. That will really encourage the sports and also recognize the sports talent among our youngsters. Incentives like that will really go a long way. Our country has a great culture, great heritage, and we also had great spokespersons. In between, we lost the momentum, but we are again regaining the moment after the recent games. And I am sure with the importance given by the Government of India, by the Sports Ministry, and also the encouragement being given by various states, once again the sports activity will gain momentum across the country, and then we will be able to march forward. This edition of Khelo India, which will feature 20 sports disciplines with indigenous sports like Yogasana and Mallakambha introduced for the first time. It's really very heartening. This is very important in order to preserve, promote our rural and indigenous games which are rooted in the tradition and are part of our cultural heritage. Needless to add, they constitute a source of national pride for us, encouraging our indigenous sports, rural sports, should be given top priority by all the concerned people by involving all the stakeholders. My dear youngsters, I always say sports and games ensure physical fitness of an individual, inculcate discipline and team spirit apart from kindling the desire to excel through healthy competition. Healthy competition is the need of the hour. They also help in developing an attitude of poise and equanimity. A youthful nation such as ours, we have 65% of our population below 35 years. 50% of our population is below 25 years. We have a great demographic dividend. If we really strengthen the sports activity in our youngsters, our country will move forward much more. Now India is once again recognized, respected worldwide. And if we, this young nation, if we focus enough on the sports activity, encourage sports in the colleges and universities, I am sure we will excel. My dear friends, the sports activity has to be encouraged at the grassroots level. That is to be remembered, recognized,
by all the concerned. I'm happy that the Khelo India University Games 2021 have been declared as the first ever Green Games. This is another speciality of these games, under which all efforts are being made to use non-plastic and reusable recycling material. It is indeed commendable that the organizers are making special efforts to ensure that everything from welcome kits to cutlery, napkins, mementos, medals, and decor at the sports meet will be made of reusable, recycled material, and vendors will take back all the packaging material after unloading, loading at all designated venues. Additionally, I am told that BMTC will deploy 50 electric buses for shuttling service between venues to minimize pollution. These are exemplary steps, and I wish to see the organizers of other events follow these good practices. I would like to commend and appreciate this very good initiative, which will be very much useful. You know that worldwide, the importance that is given to the activities, and I personally feel that we must all respect nature. My advice is nature, culture, together for better future. Climate change is a reality. Understand these youngsters. So inculcate physical fitness, do some activity, and also follow good. And thirdly, eat proteinous food, indigenous food. Don't ape the West. We are the best. Why should we look to the West? Understand this and follow the healthy food is given by our forefathers. Unfortunately, because of colonial rule and also the advertisement, the mindset has undergone a change earlier, and people look to the West, leaving the best here. People and youngsters should leave the sedentary lifestyle. Sports is one avenue. And also, as I told you, eat good food. Don't go for junk food. The pizzas and burgers may be good to those countries, but not to us. We Indians, we have best thousands of cuisines, and Karnataka is known for the best cuisines. So why should we look there? Look to that food and eat that junk food. They give the names. Chicken 65. Your age is not even 25. You want to become early 65? Youngsters should understand. When we have the best food here available, all varieties, right from ragi mudde to Natikodu Purusu. We have the best of food here available. So please go back to your roots. Eat Indian food. Encourage Indian food. And then you will be physically fit for every occasion. I compliment the Karnataka government for hosting this event along with the Jain University. This is a great opportunity given to you by the central government, by the sports ministry. You must make best use of this and become best sports person. If you are a best sports person, you will become best in the rest of the fields also. In every field, the sports spirit should be encouraged, and particularly in politics. हारना और जीतना होते रहते हैं. One has to understand and must have the patience, not to become a patient, but have patience. Wait for your turn, work hard, aim high, dream high. You will reach the heights. This has to be understood by all the youth. So, please work hard and then become some athlete or sports person. I would like to compliment the para athletics who have made a mark in the recent international event, winning, adding to the 19 medals. I really salute these youngsters and call upon all the other youngsters
to emulate their examples and see to it that you also join some activity. I am 72 now, or 73, but still I play badminton every day. Not to become a great sports person, to keep myself physically fit. If you are physically fit, then you will be mentally alert and you will be able to have a meaningful life. During our childhood, we used to play kabaddi, kho-kho, most beautiful and dutiful games. We must get back to our roots and go to those rural sports also, because we are a rural India. 60% of our population still lives in villages. There are plenty of Indian games. Let us focus more and pay more attention to those sports. My dear youngsters, I would like to compliment all of you to achieve the best in your life, and I hope that this event here in Bangalore will make history and produce the sporting spirit in much bigger way. And at the end, I declare the Khelo India University Games 2021 Bangalore open. Ladies and gentlemen, the Honorable Vice President of India has called upon the entire fraternity to make sports as an integral part of life. Thank you very much, sir. And now, we are going to witness a synchronized, tech-based Bengaluru is the digital capital of the country. So are you all ready? Just the way Shri Anurag Singh Thakurji asked, Josh, how's the Josh? Okay, tech-based sound and light show. Here we go. The Khelo India University Games now open. Ladies and gentlemen, I'd like to invite on the dais to lead the oath-taking ceremony one of our favorite athletes from Karnataka, Shri Hari Nataraj. We request Shri Hari Nataraj to take the oath. ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದು ಬೆಂಗಳೂರು? Good evening to everyone present here. We swear that we will take part in the Khelo India University Games 2021, Bengaluru, respecting the rules and regulations which govern them, and desirous of participating in the true spirit of sportsmanship for the honor of universities and glory of sports. Thank you. And now the torch-bearing ceremony of the Khelo India University Games, beginning with Ms. Sahana Kumari, Athletics, and Mr. S.V. Sunil, Hockey, Senior Athletes. As we are all aware, this is the symbolic representation of the Khelo India University Games. It's going to start. The symbolic touch will start with Ms. Sahana Kumari, Athletics, handing over to Mr. S.V. Sunil, Hockey Senior Athletes. They have done our country proud with their achievements in the respective fields of athletics and
followed by Tanisha Verma in archery, Sai Pratik badminton, Vimika in boxing, and Mr. Lohitaksha Batrinath in tennis, who will be participating in this edition of the games. Here we go. Khelo India, Khelo. Khelo India, Khelo. Khelo. जी जान लगा के खेलो. लोग चाहे कुछ भी बोले, बनना है विजेता. इस देश की संपत्ति है, देश का युवा जनता. खेलो इंडिया, खेलो. आजा बेंगलुरु. खेलो इंडिया, खेलो. Khelo India, Khelo. Khelo India, Khelo. Khelo. जी जान लगा के खेलो. लोग चाहे कुछ भी बोले, बनना है विजेता. इस देश की संपत्ति है, देश का युवा जनता. खेलो इंडिया, खेलो. आजा बेंगलुरु. खेलो इंडिया, खेलो. Congratulations to all the athletes who participated. And now, ladies and gentlemen, we are now going to the lighter side, but the entertaining side. The performance by Chandan Shetty, who is a well-known artist of Karnataka and the music director. And he has composed and sung the Khelo India anthem. It represents the spirit of playing and playing to win, emphasizing the importance of participating in playing a sport. It will also talk on the pride of Karnataka's rich sporting history as well. Ladies and gentlemen, Swagatisi Chandan Shetty. My pranams and respect to all the dignitaries present. Welcome to Bengaluru! Oh yeah! ನೂರೇ ನೂರು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ತಲೆ ಗಿರ 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 ಅಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆಂಡಾಗಿದೆ, ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಯಾರೋ ಈ ಟ್ರೈನರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತುಂಬಾ ಓಡ್ಸವ್ರೆ. ನಿಂತ್ರೆ ಸಾಕು ಬೈತವ್ರೆ, ಓಡು ಓಡು ಅಂತವ್ರೆ. ಟ್ರೈನರ್ ನಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿತಿದ್ದ ಬಾಬಾ. ಓಕೆ ಜಂಪ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ರನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸು ನಂಬರ್ ಒನ್. ಆನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಫನ್. ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. Come on, Bengaluru! Oh yeah! ಇವ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಣ್ಣ, ಅವ್ನ ಸ್ಮ್ಯಾಶು ನೋಡಣ್ಣ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೋ ನೀನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಣ್ಣ. ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ. ಮುಂಬಾರೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲು ತಂದೆ ತರ್ತಾ ನೋಡಣ್ಣ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲಾಡೋದೇ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಗೆದ್ಕೊಂಡೋಗೋದೆ. ಸೈಕಾದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೈಕಾದೆ, ಗೇಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸೈಕಾದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಖೇಲೋ ರೇ. ನೂರೇ ನೂರು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ತಲೆ ಗಿರ 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 ಅಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆಂಡಾಗಿದೆ, ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಯಾರೋ ಈ ಟ್ರೈನರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತುಂಬಾ ಓಡ್ಸವ್ರೆ. ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೈತವ್ರೆ, ಓಡು ಓಡು ಅಂತವ್ರೆ. ಟ್ರೈನರ್ ನಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿತಿದ್ದ ಬಾಬಾ. Oh yeah, jumping jacks and sprint run. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸು ನಂಬರ್ ಒನ್. On the field is much fun. Come on, let's get out and play some. Oh yeah! ಇದು ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಂಗೆಲ್ಲ ರೂಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಟೈಮು ಬಂದಿದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಗೇಮ್, ನಿನ್ನ ಗುರಿಯು ಮುಂದಿದೆ. मन लगा कर खेलेगा तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है. हार या जीत जो भी हो, गेम तो खेलना है. खेलो इंडिया इस बार बेंगलुरु में. खेलो इंडिया ಈ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. Hey, yeah, this is Kannada rapper Chandan Shetty with Khelo India from Bengaluru! Oh yeah!
Come on, Bengaluru, make some noise! Thank you. Tumba Kushi Mate Hemme Agtide to be associated with this sporting event. Wonderful initiative by government. I thank everyone who gave this opportunity. All the best to athletes. Play to win. Khelo India, Khelo! The Khelo India University Games anthem. Khelo India, Khelo! Khelo India, Khelo! Khelo India, Khelo! Khelo India, Khelo! Khelo, let's play the game, Maru. Bida beda aim, game and let's go Taru. Illa illishe, game on with the whistle blows. On the mark, get set and go. Get the rally, yare parali, nambu in the name. Spar Bengaluru, खेल होने वाला शुरू. सिर्फ ITBT नहीं सिटी है स्पोर्टी भी है गुरु. उठा अपने फीट पे वापस जाना है जीत के. जो है जीता वही सिकंदर. हारेगा तो सीखेगा गेम के अंदर. बेड़ा बेड़ा दिन चलाओ, स्कोर नल्लू इधर बलाओ. This time at Bengaluru, Khelo India, Khelo! Come on guys, sing with me! Khelo India, Khelo! Everybody say! Khelo India, Khelo! Khelo India, Khelo! युवा होके खेल का मजा ना लिया, पसीना ना बहाया, तो क्या किया और क्या जिया. Khelo India, Khelo! Khelo India, Khelo! Khelo! जी जान लगा के खेलो. आडू, गेलारंदनी आडू, आडू. लोग चाहे कुछ भी बोले, बनना है विजेता. इस देश की संपत्ति है देश का युवा जनता. तैयारी की ताकत से है तकदीर तुम्हारा. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. आडू, गेलारंदनी आडू, आडू. खेलो इंडिया, खेलो. खेलो इंडिया, खेलो. खेलो इंडिया, खेलो. Khelo India, Khelo! This time in Bengaluru. Thank you! Khelo India, Khelo! The anthem of the Khelo India University Games 2021, bringing together all sportsmen and women in the golden spirit of sportsmanship and celebrating the golden hue of the glory of competitive sport. Well, ladies and gentlemen, the Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu, is departing from the venue. But please note, the event will continue after the dignitaries leave the venue. So let's give a round of applause and thank the Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji, for his august presence and thereby inspiring all of us. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಸಹ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. We would also like to express our thanks to the Honorable Governor of Karnataka, Shri Thawarchand Gehlot. Bengaluru, yelli nimma chappale! We are deeply honored to have had with us the towering presence of the Honorable Absolutely. Vice President of India. His presence here was a show of support for all the athletes participating in these games. Thank you very much, sir. Once again, coming back to the most important aspect of the cultural program, that, as we are all aware, Karnataka is known for its rich cultural heritage. And of course, now we are going to showcase the rich cultural heritage of Karnataka through folk artists. And as you all know, artists are not after money, they are after your clapping. So please put your hands together and welcome the artists who will showcase not just the cultural heritage of Karnataka, but different parts of the country, Chande, Nasik Dols and Punjabi Dols. So the countdown has begun for the cultural presentations. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go.
Bring the drums out, bring the dholes out.